Hello, everyone. Welcome to another exciting session of Samanvay. My name is Fauzia Faruqi. I teach at Princeton University, and I'm also the executive director of Samanvay Space. This organization that is hosting this very exciting event. And Samanvay, let me tell you a little bit about Samanvay Space. Samanvay is a non-profit cultural organization dedicated to the promotion, preservation, and appreciation of all forms of Indian arts and literatures, both locally and globally. We host at least 3 events per week. One music or performing art based event, one poetry or literature based event, and one event that we call Art a Perspective, which is very Actually, important for us because we believe that in order to promote art, promote literature, it's not enough to only present the creative pieces, but it is also very important to have knowledgeable people who come together and talk about the process of writing, the process of creating art. So today, as part of this event series, Art a Perspective, we have two eminent speakers, two eminent scholars with us. And before I talk about their topic, which is Jugalbandi between a poet and a translator. So you can guess that one of these two guests is a poet, at least for this session, even though she does many other things, and another is a translator. So let me first introduce the poet today. We are honored to have Professor Sukrita Paul Kumar with us. Sukrita is a former fellow of Indian Institute of Advanced Study, Shimla, held the Aruna Asaf Ali Chair at Delhi University. She was also an honorary faculty at Corfu, Greece. She was an invited poet at the prestigious International Writing Program to Iowa, the USA. She has published several collections of poems, the recent ones being Country Drive and Dream Catcher. Her critical books, including Narrating Partition, The New Story, and Conversation on Modernism. She has co-edited several books that include Ismat, Her Life, Her Times, Cultural Diversity in India, Speaking for Herself, Asian Women's Writings. Her translations of fiction from Urdu and Hindi have been published by HarperCollins and Katha. Among many other fellowships and residencies of international significance, she was also invited to be an honorary fellow and resident poet at HK Baptist University, Hong Kong. Her special academic interests are world literature, partition literature, gender studies, translation. She has held solo exhibitions of her paintings. As I said, that she is a multifaceted personality. We are focusing on her work as a poet today, but she has done a tremendous amount of work in other fields. She is a painter in her own right. And also, I'm proud to share, as the executive director of Samanvay, that Sukrita Paul Kumar is also a member of Samanvay's advisory board. And our translator who is participating in this Jugalbandi today is Dr. Rekha Sethi, who is a researcher, scholar, writer, editor, and an educationist. As associate professor at the oldest women's college of the University of Delhi, Indraprasth College for Women, established in 1924, she has been teaching graduate and postgraduate students for almost 3 decades. Her main area of work is post-independence Hindi poetry and fiction, gender studies, and media studies. She has served as the vice principal of the college and currently is the coordinator of the Translation and Translation Studies Center at the college. She has authored several books. Her major publications include Vigyapan.com,
विज्ञापन, भाषा और संरचना, व्यक्ति और व्यवस्था, स्वतंत्रतर, हिंदी कहानी का संदर्भ. She has edited 3 volumes of essays titled निबंधों की दुनिया on Premchand, Harishankar Parsai, and the list goes on and on. As a critic and reviewer, she has published reviews and articles in several literary journals, including Indian Literature, the Book Review, Hans, Naya Gyanoday, Samved, Purvagrah, etc. She has translated a volume of poems by Sukrita Paul Kumar, who is with us, titled Samay Ki Kasak. So she is her discussion and her translation that she is going to be talking about, and the process of that is based on a real project that both Sukrita and Rekha did together. She presents her academic work regularly among national and international journals. Some of the eminent international conferences where she presented papers were held at the University of Lisbon, Rutgers University, New Jersey, and Imperial College London, UK. So, I mean, I can spend the entire session just talking about our guest accomplishments, but we are here to experience in this Jugalbandi between a poet and a translator. So Sukrita, a poet, and Rekha, a translator, for this session will be in conversation on the writing and translation of poetry. For them, this Jugalbandi has been vital to the very process of recreating or translating poetry, if only to make poems acquire independent lives in English and in Hindi. In this session, the internal dialogue between them will surface as the poems in both languages, poems in both languages will be presented alongside. So we are going to hear the same poem first in origin. I mean, I don't know first or what. I mean, we will change, I guess, that order. Sometimes first the original in English, and then its Hindi translation, or vice versa. And about the structure of this session, I will let these two masters of their crafts to get alone, and they will have their Jugalbandi. They will recite poems for us, and some questions and some comments, I believe, and I'm looking forward to that process, that they will emerge from this very act of Jugalbandi. And after that session, there will be a discussion and question and answer session based on audience comments and questions. So I really encourage you all who are listening to them on YouTube or Facebook, please write your comments, because we can, at least on Facebook, I believe that we can see your comments. So I will be noting down your questions and your comments, and then I would request Rekha ji and Sukrita ji to respond to some of those comments and questions. With that, I will let Rekha ji and Sukrita ji take charge of this session, and I am looking forward to just sit back and enjoy and experience this session and be inspired. Thank you, Rekha ji, and thank you, Sukrita ji, for being here. Thank you very much, Fawzia. Thank you. Thank you, Fawzia, and thank you to Samanvay Space for giving us this opportunity to share this Jugalbandi. So, Sukrita ji, how should we start? Actually, I wish to share a small incident or an anecdote with our audience. Actually, this is the original book, Untitled, which, when Sukrita gifted it to me, she wrote for Rekha, who is on a similar journey of words just as me. So we thought we will walk together and we'll share together, and thus the seed of translating the book was sown in my mind. So Sukrita, how did you feel how our journey has evolved? I think we have chosen a very good title for our
session today, Jugalbandi, because this is how we started, isn't it? It was a kind of a Jugalbandi right from the beginning, because it's not as if we were thinking of each other in any hierarchical way like normally it happens between a poet and a translator. Because my firm belief it is that in order to be a poet, you have to be a translator, and in order to be a translator, you have to be a poet. And these things, I mean, the categorical kind of differentiation that we have carved out, I think it's very artificial in one sense. But technically, of course, one can say that this is the original because it comes first and then the translation happens. But I think in the case of both you and I, when you started reading the book and the way this whole process happened, I am not sure that I would say that yours is a mere translation in a technical way. I think you have created you have recreated another kind of a poem out of the poem that I had written. So by that, what I mean really is that any translation has to stand on its own legs if it has to become a successful poem. So I see no reason why we mentally build up any hierarchy between the poet and the translator. So that's why I think in Jugalbandi, the way we have functioned in the process of writing and translation, because also when I think of myself in the process of creative writing, I often think that there is something happening in my mind by virtue of going through an experience, and that experience calls for a certain kind of translation into words. So I am also translating when I think I'm creating an original. So we don't have to really go in a straight jacketed fashion. So Jugalbandi means being on the same plane, and therefore a conversation happens. सुकृता जी, संगीत में जब जुगलबंदी होती है जी, तो दोनों अपने अपने क्राफ्ट के मास्टर होते हैं, तो एक कोई कुछ बजाता है या गाता है तो दूसरा एक तरह से उसका जवाब देता है, और वो जवाब देना मतलब उसी एक प्लेन पे होते हैं दोनों, लेकिन दोनों जिस तरह से एक दूसरे को चुनौती देते हैं जिससे कि दोनों का उत्कर्ष होता है, तो वो जुगलबंदी की जान होती है। तो मुझे भी लगता है कि अनुवाद में यही जान है कि क्या आप उस भाव को दूसरी भाषा में इस तरह पकड़ पाए कि नहीं, कि जैसे एलियट कहते थे ना कि हर बार मतलब जो ट्रेडिशन है उसमें जब इंडिविजुअल टैलेंट आता है तो वो उसको रीऑर्गेनाइज करता है उस ट्रेडिशन को। तो जैसे अनुवाद होता है तो जिस भाषा परंपरा का एक इतिहास होता है कविता का, तो वो कवि का अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उस यानी जो जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है वहाँ उस भाषा की जो परंपरा है वो उस भाषा में दूसरे कवि को पूरी तरह स्थापित कर सके, कि वो कवि उसी परंपरा की एक कड़ी बन जाए। तो मुझे लगता है जब वो पूर्ण उत्कर्ष पे तभी पहुंचता है, तो इसीलिए ये एक तरह की चुनौती भी है और एक तरह का संग साथ भी है। पता है क्या रेखा, मुझे ये लग रहा है क्योंकि तुम भी एक अध्यापक हो और आई एम आल्सो अ टीचर, so we can actually hog this entire time by talking about it. But I think we should also go into poetry and also see how. And I don't even feel like saying my poetry, because when it happens, when a poem happens, and particularly when it gets translated, I think it's everybody's poem. If it's come out, one is only a medium. You become a medium through which it takes its shape.
words come, and words are, in any case, we know that words exist in the social domain anyway. We, as creative writers, we choose those words, isn't it? And when we are choosing those words, in the choice, there is an aesthetics that is built up. And within that aesthetics, there is, as you are rightly saying, there's a certain kind of a dynamism. And the person who claims to be translating is actually homing the poem into another language. It's that homing. This is a new thing that I'm saying, because usually, I use the word owning. Of course, owning happens. Owning of the poem happens by the person who is going to translate. But more than owning, I think it is homing, because then the poem not only homes in one particular individual's mind, but it is homing in a vast, as you rightly said, into a tradition, and that tradition gets a little expanded because something has come from another language into this. So yes, I meant the same. The process is very amazing. It's an amazing process, and I think we experience that process. And I would say that to start with, when I was looking at even the title, I had titled the book Untitled. I didn't want it to be. Tell me, why did you give it a title? When you published them in Hindi, you actually gave a title to the book, Samay Ki Kasak. So why did you do that? Actually, जैसे हम बात कर रहे थे कि मतलब जब दूसरी भाषा में आता है तो हमें दूसरी भाषा का पाठक भी ध्यान में रहता है. तो जैसे अंग्रेजी में अगर आप कहें अनटाइटल्ड, तो एक तरह का लिबरेशन है कि आपने जो भी दायरा बन सकता था या चौकटा बन सकता था, आपने उसको तोड़ के उसे बिना किसी शीर्षक के उसको आज़ाद कर दिया एक तरह से. अब अगर मैं उसको हिंदी में कहती हूँ बिना किसी शीर्षक के, तो वो आज़ादी समझ में नहीं आती. तो एक तरह से हिंदी में जब मैं कहती हूँ कि समय की कसक, तो ऐसा लगता है कि समय का एक विराट कॉन्सेप्ट है, उसकी एक विराटता है और उसकी एक धड़कन की तरह ये कविताएं यहाँ मौजूद हैं. तो मुझे लगा कि जो पढ़ने वाला है उसको वो जो आपने विराटता की छवि दी वो भी रहेगी, और उस पे जो मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि एक तार को जैसे संगीत में छुआ जाता है, तो वो एक कसक भी रहेगी, वो एक मौजू भी रहेगा, वक्त भी रहेगा, समय की धड़कन भी रहेगी. तो मतलब छोटा होना और बड़ा होना एक साथ, तो ये दोनों चीजें इसमें जुड़ जाएंगी. तो मुझे लगा कि शायद ये, और एक कविता भी है इसमें, इन द थ्रोज ऑफ टाइम, तो समय की कसक में जिसमें ये बिंब बनता है. तो मैंने इसलिए वो कविता के शीर्षक से शीर्षक उठाते हुए ये, और आपको याद होगा कि मैंने लिखा था समय की कसक में, फिर आपने कहा कि मैं हटा देते हैं, तो मैं हटाने से उसको फिर एक आज़ादी मिल गई. तो इस तरह से ये कविताएं ऐसे बनी. तो अब मैं कहूँगी आपसे कि आपने अपनी किताब में जो प्रीफेस के तौर पे, एक प्रस्तावना के तौर पे जो कविता लिखी थी, हम उससे शुरू करें और आप वो कविता सब पढ़ें. ये आमतौर पे होता है ना कि अगर आप किताब छापने जा रहे हैं तो आपको पब्लिशर कहने लगता है, ऑलराइट, एवरीथिंग इज कंप्लीट, नाउ कम आउट विद द प्रेफेस, कम आउट विद द फोरवर्ड. And again, I wanted liberation from that. I didn't want it to become a preface, because preface would normally either build up a perspective or it would give a certain kind of a framework within which you see the rest of your poems in that book. So I said, all right, if you have to have something, I will write a little poem as a preface. And I called it Of Creative Anxieties. It's a small piece, but I'll read it out. Of creative anxieties. In the process of writing, I am ahead of myself always, and there is no looking back. The rest of the time, I am stalking myself, and there is no looking ahead. The issue is
that of keeping pace. दोस्तों, मैं आपका परिचय कलाकार पेंटर सुकृता से भी कराना चाहती हूँ। ये किताब देखिए जो हिंदी में अनुवाद के तौर पर आई। इसके कवर पेज पर सुकृता जी की पेंटिंग है और देखिए इस पेंटिंग में न जाने कैसे लगता है कि जो शब्द उन्होंने अभी अभी पढ़े वो साकार हो रहे हैं कि आगे देखो तो पीछे मुड़ के देखने को कुछ नहीं लगता, और जब पीछे मुड़ के देखो, जब अपना ही पीछे करो तो आगे देखने को कुछ नहीं लगता। तो हमने इस किताब के कवर पे ये पेंटिंग शामिल की और इसके पीछे की तरफ ये जो प्रस्तावना की कविता थी वो मुख्य कविता बनकर उभरी है। तो अब मैं उस कविता को हिंदी में पढ़ती हूँ। सर्जना के तनाव में। रचने की प्रक्रिया में मैं हरदम अपने से आगे ही रहती हूँ। रचने की प्रक्रिया में मैं हरदम अपने से आगे ही रहती हूँ, पीछे मुड़कर देखने को कुछ भी नहीं। बाकी बचे वक्त में मैं अपना ही पीछा करती हूँ, आगे देखने को कुछ भी नहीं। मुद्दा सिर्फ कदम ताल बनाए रखने का है। मुद्दा सिर्फ कदम ताल बनाए रखने का है। सुकृता जी, अंतिम पंक्तियां आप एक बार फिर से पढ़िए। द इशू इज दैट ऑफ कीपिंग पेस। यस, और इसी में मुझे बहुत मजा आ गया आपकी वो ट्रांसलेशन में। मैं ये पढ़ती हूँ आखिर वाली पोएम्स, आखिर वाली पंक्तियां। The rest of the time, I'm stalking myself, and there is no looking ahead. The issue is that of keeping pace. और आपने उसको कदम को गति की जगह कदम ताल, तो वही जैसे जुगलबंदी है ऐसे ही साथ साथ चलने का जो भाव है कि एक पांव उठता है और दूसरा उसका साथ देता है तो कदम ताल बनती है। तो वैसे ही हमने कोशिश की। ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन हुई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गति या कुछ वैसी बात करते तो वो it would have been a very literal kind of a non-creative translation. And the very fact that it has become a creative translation is because you're taking a liberty with choosing a different word. And that little freedom, that freedom that you take, that is what makes it another original. The poem becomes another original. And that is the internal dialogue that they are having, you know. This poem in English and the same poem in Hindi. But does it remain the same? I'm not sure. No. But it becomes a little different. Because there's a different kind of the rhythm may be the same, the internal spirit is the same perhaps, but there is जिसको आप हिंदी में आवरण कहते हैं ना शायद, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया. And this is what is making the poem become richer in another language. सुकृता जी ने बहुत सी कविताएं कविता लिखने के प्रोसेस पे लिखी हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि आपकी जो कविताएं हैं वो ऐसे नहीं है कि जैसे कोई कविता की पाठशाला बनाती हो, लेकिन वो उसमें ऐसे ऐसे बिंब उभर आते हैं, ऐसी ऐसी इमेजेस बनती हैं, ऐसे चित्र बनते हैं जहाँ कविता कैसे रूप धरती है पन्ने पर, उसका पूरी प्रक्रिया दिखाई देती है. तो ऐसी इस संकलन में एक बहुत ही कविता जो लोकप्रिय हुई, हम वो आपसे साझा करेंगे, द आर्ट ऑफ वेयरिंग बैंगल्स. जी सुकृता जी आप पढ़िए. ठीक. The art of wearing bangles. The blank page wears words with the fondness and patience of girls wearing glass bangles. One by one, carefully, gently,
the right fit that should not break and injure the hand squeezing through. They are not to dangle loose and wide, or remain too close and feel the skin. Let them take over the throb, jingle in glee, slide into action, tune in to the dance of a poem on a page. चूड़ियां पहनने की कला, खाली पन्ना पहनता है शब्द उसी शौक और सब्र से जैसे लड़कियां पहनती हैं कांच की चूड़ियां, एक एक कर ध्यान से धीरे धीरे, एकदम सही माप की, न चटके न खुरचें, दबती कलाइयां गुजरती हैं जो उन गोलाइयों से, बहुत ढीली लटकती हुई भी न हो, न इतनी तंग कि टकरा जाएं त्वचा से। झंकृत होने दो उन्हें, उल्लास में छलकने दो, गति में थिरकने दो, नृत्य में लय हो जाने दो, जैसे कविता होती है लय पन्ने में। झंकृत होने दो उन्हें, उल्लास में छलकने दो, गति में थिरकने दो, नृत्य में लय हो जाने दो, जैसे कविता होती है लय पन्ने में। बहुत अच्छा. You know, Rekha, what I get reminded of is because my poems were translated also by Gulzar Saab. And the volume that we did together, my poems in English, and on the other side, the poems in Hindustani. And you know what he said? He said, I translated your poems. I asked him, I said, why are you translating my poems? Because usually people are after you, and you know, people also actually think that I have translated his poems. But it was he who translated. And you know what he had to say? He said, because I see a lot of Hindustani culture and ambience in your poetry. And I want to dig out that Hindustani from your poetry. And that is why I'm translating you into Hindustani. So, what did he call this volume? He called this volume Poems Come Home, which means that these poems who were written in English are coming home in Hindustani. I don't agree totally. I don't, because I feel that the English that I was using was also doing something to that Hindustaniyat, you know. But that's a different story. But in this particular poem, I'm reminded of that because after all, the symbols and the images that I'm using are very Hindustani, you know. The way, particularly in Hyderabad, when you go to that, what is it called near Charminar, where you go and buy bangles? And Churi Bazaar. In the Churi Bazaar, you should see how delicately, you know, the gentlemen, normally men who are selling bangles, and women are sitting there, and these are glass bangles or other bangles, and how so delicately they handle the whole process of trying it out on your wrist. And I was quite touched by that when I witnessed it. And somehow years later, it came out in the process of, you know, writing a poem about writing a poem, right? And so the art of wearing bangles is actually the art of writing a poem here. And I love the way you have taken the liberty of using the word golaiya, you know, which is so beautiful, and it adds value to the poem. So I just wonder why you chose to translate these poems. Because the line in English said passing through. So in Hindi it does not feel complete passing through what. So I just added this golaiya to give the image of bangles. But I must say one thing, जो आपने कहा कि गुलजार साहब ने कहा कि कविता a cultural baggage of its own, right?
So obviously, when a poem is carried from one language to another, it cannot be verbatim or cannot be, just the vocabulary. These are also concepts, right? जी Concepts. So बिल्कुल what can be very easily used in English as squeezing through, right? And it would pass. But in Hindi or in Hindustani, I would like to say, if you just say use the word squeeze in some way or the other, it would not bring in that sensuality, or एग्जैक्टली rather actually sensuousness. So, and also, which you very something that you are saying, which is very important. I mean, the Golayo silk, it also refers to the body of a woman. जी So, and the मैंने तो delicate, फौरन ये जी हाँ, हाँ, वो इंग्लिश में नहीं आएगा. वो इंग्लिश में नहीं आएगा हाँ. क्योंकि So, जो इवन आप तो आर्टिस्ट हैं और पेंटर हैं, जिस तरह हम विजुअलाइज भी करते हैं, है ना, तो हम किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं खास कल्चर में, right. जो ब्यूटी के भी पैरामीटर्स हैं और वो भी अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कि वो गोलाइयां जो है उसमें नई उससे एक कुछ नई बात पैदा हो गई। लेकिन आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि गुलजार साहब ने जब आपकी नज़्मों का तर्जुमा किया और कहा कि उसमें हिंदुस्तानियत है, तो ट्रांसलेशन के बारे में जब भी बात होती है तो एक बात ये भी सबसे बड़े मसले के तौर पर की जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज की हाउ टू ट्रांसलेट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स from one culture into another culture. And then, but here you are writing in English, but you are an Indian woman, and your poems, as rightly so Gulzar Saab said, are very, very Hindustani, I would, and then very, very feminine and feminist and all of that, like that sensuousness of Hindustaniyat with certain kind of gender consciousness, that's all there. And interestingly, रेखा जी, मतलब ये सवाल मैं आप दोनों से बाद में पूछने वाली थी कि रेखा जी और आप में बहुत चीजें कॉमन हैं। जबान, आप दोनों अलग अलग जबानों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसी परिवेश से आती हैं, उसी पस मंजर से आती हैं, और वो भी एक औरत हैं, वो भी एक हिंदुस्तानी औरत हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या बचता है फिर वो ट्रांसलेट करने के लिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मसला भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई वुड लाइक टू लिंक दिस पॉइंट आल्सो विद द फैक्ट दैट English, I think the way we have always looked at English in this part of the world, and in fact most colonized countries, we have that's why we keep talking about decolonizing the English departments or decolonizing English itself. Because if we say that we have accepted English as one of our bhashas, right? So then automatically English is going to have an admixture of Malayalam, of Gujarati, of Hindustani, and it is going to become a different English, right? It's going to acquire that cultural connotations which would be added to, an English gets enriched by that. I am not sure. There was a point in history, the historical context of language that is called English. At a certain point, even in terms of the pronunciation and the accent, etc., one used to mimic the British. And we used to call it the received pronunciation of the British. And we used to mimic that because we thought that was the best, and we needed, that was his master's voice, and we needed to follow that. But subsequently, I think 70 years down the line, we have worked hard to see that we start owning English not as a language of authority or, as a master's language, but as one of the bhashas out here. And if that is to happen, then automatically the Hindustani would get added to it, but will not only be Hindustani. Yeah. Would have some cultural inputs from English language would come into interaction, and negotiation will happen. And that is also a certain kind of a translation that is happening, right? Yeah, it's translation because the context is very Indian.
There is Punjabi within me, there is Hindi within me, there is Urdu within me. And all these languages are kind of interacting with each other into my English, right? So when I'm writing in English, I am actually, in one sense, I'm already translating partially. I am translating, right? And therefore, to have a disregard for English language in my poetry would also not be fair. It won't, yeah. Isn't Absolutely. It? No, So bilkul, I agree. Yeah, so this whole question of translation, purity of language, actually translation defies purity of language. And original writing also defies that. Any original writing. Because you are not going to be a pundit in that language, right? You are going to go into the authenticity of the language, the authenticity which is the understood and common and has roots in a particular locale. And if it has roots in that locale, then the language is going to change. It's going to become unique to your expression in some ways. And that is why you have these terms in Hindi also, like Anchalik Bhasha kehte hain na? Anchalik Bhasha. So it has its validity. So that is why I think the kind of Jugalbandi that happened between Rekha's translation and my writing, it was dependent on this. When she asked me, she said, please have a look at my translations. And if you okay them, only then I would proceed. And I told her, I said, it's not a question of my authority over that writing. Particularly in poetry, you cannot dictate meanings, interpretations, experience. In all writing, you cannot do that. I would hate myself if I were to say, oh, but your interpretation is wrong. This is not a question of interpretation. The beauty of writing poetry is that you are representing in some ways several layers of an experience. These are multiple layers. You might pick up on one layer, which is yet another layer, which as a writer, I'm not even aware of at times. I may not be aware of it, but you may have picked it up. So if you have picked it up, that would mean that you have owned it, that you have homed in it, and the poem has homed in that language. And so it is an autonomous entity. That poem in Hindi language becomes autonomous of the so-called original. So these are very tricky words, and particularly in translating poetry, I think we have to give autonomy to the translation. You know. And you remember, Rekha, when we talked about it, and I said, no, I don't want to put my stamp there and say, this is right or wrong. Then there's something wrong with me if I'm doing that, you know. And you had all the freedom to do what you liked with it. Yes, actually. शुक्रिया रेखा जी. सॉरी, मैं तो बस आपकी गैर मौजूदगी में was filling in, but I am like really excited. I'm like actually taking notes. And so I will leave you. मैं अब आप लोगों की बात सुनूंगी पर्दे के पीछे से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी और जो कविताएं हैं, जैसे जो आपने कविता सुनाई तो गोलाइयां और बहुत सारी बातें आई, तो कुछ और कविताएं भी आप लोग सुनाइए. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो रेखा बताइए, मैं सोचती हूँ कि सुकृता जी का चित्रकार रूप सामने आए तो जरा एक पेंटिंग वाली आपकी पेंटिंग सनराइज हो जाए. Sure. वैसे भी फौजिया के यहाँ बरसात हो रही है तो सूरज भेज रहे हैं हम. This poem came out of frustration because I was desperate to make a painting and I was not in a position to sit down and paint. So I then wrote this poem. And so let's see what you make out of it. Painting sunrise. Cold blackness mingling with clear Prussian blue. Carving depth around the border, between the earth and the sky, the horizon. Slabs, one resting
over the other, silent, rhythmic knocking, the wall crumbling as the folds of colorful skirts emerge, following a long dancing foot, peeping through cracks and creaks, 1,000 dark arms embrace the rising bright colors. This is painting sunrise. बहुत अच्छा, beautiful. सूर्योदय रंगते हुए कोयले की काली स्याही घुलती जाती गाढ़े नीले रंग में, किनारे किनारे गहराइयां तराशती धरती आकाश के बीच क्षितिज, एक दूसरे पटहेरी सिल्लियां, खामोश लयात्मक दस्तक, रंगीन स्कर्ट की तहों से चटकती दीवारें जो उठती और चल पड़ती, एक लंबे थिरकते पैर के पीछे दरारों और सेंधों के बीच झांकती, हजार हजार बाहें उगते हुए चमकीले रंगों की भर लेती बाहों में। ऐसे ही उगता है सूर्य, जैसे पूरा बिंब सामने आ गया हो, बाहें फैलाए रोशनी की किरणों सा। इंटरेस्टिंगली रेखा, इसके बाद मैंने एक पेंटिंग बनाई, बहुत कोशिश की कि ये इस पर बनाऊं, यू नो, लाइक, बट इट डिडंट कम आउट वेरी वेल. So the paint, the desire to paint became a poem, which was, I think, reasonably fine. But from the poem, I tried to make the painting later, and it didn't come out the way I wanted. So, you know, you can't start directing a painting to become what you. I mean, you can't be hypothetical about it. That all right, I've already written it, and now I'll make a painting. It can't happen that way. चलिए अब छोटी छोटी कविताओं की तरफ चलते हैं। पहले पगोड़ा कविताएं पढ़ेंगे और फिर छोटी छोटी कविताएं। ठीक, अब आप शुरू कीजिए मैडम। नहीं, पहले एक आप पढ़िए, फिर दूसरी में हम उल्टा करेंगे। All right. So I'll read the first one. It's called Pagoda Poems. This is a series that came out of my experience in Vietnam when I'd gone there for a poetry festival, and I visited the Master Pagoda near Hanoi, actually. And I read the first one. These are series, but small ones. 9 times over, the word nothingness emerges again and yet again in the 20-word poem by the master monk. The dragon, they say, descends into the sea searching for meaning and spewing jewels that become rocks, that pierce into valleys of rocks. Columns of light rise, dressed in stunning colors, devils dancing in step with gods. All in all, adding to nothingness and making meaning. 9 बार और फिर से एक ही शब्द शून्य उभरता बार बार उस भिक्षु गुरु की 20 शब्दीय कविता में। ड्रैगन, वे कहते हैं, गहरे उतरता है सागर में अर्थ की खोज में, और मणियां उगलता है, नुकीली चट्टान बनती हैं मणियां, बेच जाती हैं चेतना के मर्म को, उठते हैं ऊपर रोशनी के स्तंभ, अद्भुत रंगों से सजे, नाच उठते हैं दैत्य, देवों से ताल मिला, कुल मिलाकर शून्य में जुड़ता चलता कुछ, बहुत कुछ, और रचता है अर्थ। अब इसकी जो अगली कविता है वो मैं पहले पढ़ती हूँ और फिर उसे अंग्रेजी में हम करेंगे। जी। क्या है वास्तविक?
आसमान में फड़फड़ाते पक्षी की छवि, या फिर तेज बहती नदी में रुका हुआ अक्स, पानी में हिलता चांद, या फिर ऊपर ठहरा चांद, समानांतर, निरंतर। बहुत अच्छा. These are rather philosophical. बहुत खूब. What is real? Image of the bird fluttering in the sky, or the one still in the gushing river? The wavy moon in the water, or the one above that is steady, parallel, forever? तो ये पैरेलल और फॉरएवर में समानांतर निरंतर बहुत अच्छा से समा गया एक तरह से. बहुत अच्छा. और literally, this is the first time I'm asking you this question कि ये जो nothingness का you have translated it as शून्यता. Yes. Interesting, because see, in English it would not be shunyata. It's not zero sum kind of thing. You know? So philosophically it becomes different. I understand, yes. But philosophically, shunyata would be definitely a Hindustani construct. Right? Yes, yes. But this अगर मैं कुछ कहना चाहूँ या जोड़ना चाहूँ, लेकिन यही बात मैं कहना चाहती थी कि सुकृता जी, जैसे आपने जब जो नज्म लिखी है या जो आपकी कविता है अंग्रेजी में भी, इवन इन इंग्लिश, because of the topic and the philosophy and your own kind of sensibilities, it is shunyata in that poem. You know what I mean? It is not like nothingness in that very mundane sense. It is shunyata based on the context. Even when maybe I am, because I am familiar with the idea of shunyata. I also, as a reader, come from the same culture that you as a poet come from and Rekha ji as a translator come from. So when I am reading that nothingness, I actually feel that shunyata. So that's why it's interesting that the poem transfers kind of like, in terms of expression from one language to the other very seamlessly. Yeah. So it is interesting that because I mostly work with translation, translated text, because I teach Indian literature in English. So, and I have so many friends from American academia who come from American background, and I hear a lot about a lot of issues. It is interesting that even though you are using very different words, but issues are not emerging here, yeah. I feel. And people say that it's best when you translate from one language to the other, where, the person who's translating should come from the language that the poem is being translated from and from that culture. But I'm just babbling also because these are new realizations for me, that what all the positive things and advantages when a person comes from the culture that the author is from. And here it's like, it's a very interesting mix, because saying is something very interesting. But I must tell you that when I use the word nothingness, not only here but whenever I'm writing, or because I have been very deeply influenced by the theatre of the absurd, right? So the theatre of the absurd looms over my head all the time. In my understanding of the universe, of cosmos, of my living, my life, of a human being's life, sense of being, as it were. And I immediately go into, that domain of nothingness and seeking meaning only to come back to the point of nothingness. So that's also a philosophic precept. But when you say shunyata, then you are
going into another cultural context, that is why I said it adds the value to the poem, further adds a volume. However, the intertextuality that I am using in this poem is with the theater of the absurd, but housed in the Buddhist nothingness, right? Yeah, Which is yes, that of the pagoda. So look how Ji. they're all coming together in one sense. It's a confluence of the idea of shunyata, the idea of nothingness in Buddhism, in Hinduism, or call it, don't even want to say Hinduism, but this part of the world where you have that philosophic precept of shunyata. And then you have the Western context, which is the continental one. So it's very interesting to see how those nuances come together and make literature an all-time affair, beyond borders, as it were. Yeah, absolutely. Yeah. It's So an what do you? enchanting discussion. Yeah. Yeah, Rekha, what do you want to do now? Do you want to do your little poems? Yeah. We'll All right. do the little poems and then move to the end game. All right. So these little poems are actually very little, and these are like in short stories. You have short shorts. These are 2 lines, and they're not haikus, but they're very small, 2 lines, 3 lines, and so on. So we'll just read 2, 3 of them at a stretch, and then you read all 2, 3 of them. Yeah. Shall we do it that way? Yeah. And these are different lines. Buddha in grey stone, melting in white peace. You want to read it? सलेटी पत्थर में बुद्ध शुभ्र शांति में पिघले हुए. वाह, अच्छा लग रहा है, बहुत हिंदी में बहुत अच्छा लग रहा है. तो वो सफेद को हम शुभ्र ले आए उजलेपन में. वेरी नाइस. हाँ बोलिए. अब मैं पढ़ती हूँ हिंदी में, फिर आप अंग्रेजी. सुई की आंख से गुजरती एक चीख, एक शिशु का जन्म हुआ है. क्या बात. A scream shooting through the eye of the needle. The baby is born. It's also imagistic, I think. Right? So now you want to do end game? Actually, it depends. If you want to leave more time for discussion, then maybe we can move to Ganga poems, or we can do 2 more, the end game and the out of the box first. Okay, all right. So let's do out of the box first. Okay. You want me to read it first? Yes. Out of the box. That this world has worlds beyond the stars I did not know. The blue of the skies I had never pierced, nor trekked on the purple rocks above the tree line. Never had I dived into the orphan's eyes to feel the grains of sand there, to feel her loveless childhood. Where was the scent that led to the valley of flowers? Why did I not hear the silence resounding in the hollow of the shell? I thought I had told and heard them all, the stories of pain and pleasure, of thirst and desire. Till you came out to me, my friend, you told it all. The story of your love, of its revelation. First and foremost, you found the courage to tell it to your own self. With that nervous glint of conviction, you told it all. The shiver of brutal resolute mixed with fear. You, a woman in love,
with another woman, crossing the line of control, unlocking the prisons of thought, like birds flying across sealed borders, risking prosecution and even life. Bits of truth buried in the graveyard of words rose as if from the vaults in the bottom of the sea, like fireflies lighting the dark shores of life out of the box. सुकृता जी, ये कविता मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी। असल में जब मैंने ये संकलन की कविताएं चुनी तो इसमें इतनी सारी सुकृता एक साथ आ रही थी ना, अलग अलग। जैसे आप कह रही हैं ना कि कई संसार बसे हुए हैं, तो आपकी कविताओं में भी जो इतने सारे संसार बसे हुए हैं, कोई जो प्रकृति से जुड़ा है, कोई जो एक बिल्कुल फिलोसोफर के प्लेन पे जीता है, कोई आम जनता के बीच होता है। तो एक ही कविता में मुझे ऐसे लगा कि जैसे जहां से बात शुरू होती है और जहां बात पहुंचती है, तो सामान्यतः हम साधारण घटना से शुरू कर और उसकी दार्शनिक ऊंचाइयों तक जाते हैं, लेकिन ये कविता दर्शन के विचार की ऊंचाई से एक ऐसी घटना पर आती है जिसे हमने बहुत अपने मन की तहों में बंद करके रखा हुआ है और अचानक वो दुनिया खुल जाती है। तो मतलब यही उसका दायरे के बाहर। फौजिया जिक्र कर भी रही थी कि हमें कितने दायरे समझाए जाते हैं जिंदगी के शुरू होने से ही, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स, उस दायरे के बाहर सोचने की बात है। इस संसार में बसे हैं और भी संसार, सितारों के पार, मुझे पता ही नहीं था। आसमान के नीलेपन को कभी बींधा ही नहीं मैंने, ना ही कभी पेड़ों की पंक्ति के ऊपर फैली जामुनी चट्टानों पर चढ़कर चली। कभी किसी अनाथ आंखों की गहराइयों में डूबकर भी नहीं देखा, नहीं महसूस किया बालू से खुरदरे स्नेह रिक्त बचपन को, फूलों की घाटी तक पहुंचाने वाली खुशबू कहाँ थी। क्यों नहीं सुना मैंने वह सन्नाटा जो गूंजता रहा शंख के खोखल में। मुझे लगा कि सब कह दिया, सब सुन लिया मैंने, कहानियां पीड़ा और सुकून की, प्यास और कामना की। जब तक कि तुम नहीं आई मेरी दोस्त और तुमने वह सब नहीं कहा, सुनाई तुमने कहानी अपने प्रेम की, खोल दिया उसका रहस्य। सबसे पहले साहस किया तुमने खुद अपने से कहने का, अटल विश्वास की चमक से झलमलाती बेचैनी के साथ सब कहा तुमने। निर्मम संकल्प का वह कंपन भरा था जो अनजाने भय से। तुम्हारा एक स्त्री होकर चाहना एक स्त्री को, सभी लक्ष्मण रेखाएं पार कर कैद सोच के ताले खोल, उड़ जाते हैं परिंदे जैसे अभेद्य सीमाओं के पार। अभियोग या जीवन की परवाह किए बिना शब्दों की कब्र में दफन सच्चाई के अंश, समुद्र की गहराइयों में बंद तिजोरियों से उठे ऐसे जैसे जुगनू जीवन के अंधेरे किनारों को जगमगाते हुए। बहुत अच्छा। So, yeah, this is, I think what you said, Rekha, is it's making sense. Sometimes it's philosophy that takes you to the mundane, or it's usually the other way around. The mundane takes you to the philosophic set. So I think it just depends. Life is so beautiful, isn't it? There are endless number of possibilities that exist in life, if only we are attentive to it. So the artist or the writer only has to be attentive, that's all. Full attention.
And then you gather so much from life. You get so much out of life, you know. So it's just that I think it just depends on how alert we are to our own living and that sensitivity that one needs to have to every little bit that happens or doesn't happen. Even that. You're very fond of End Game, so maybe we should read that. Actually, end game presents, or I think it problematizes the issues of translation, because you call it end game and I call it kasai bade mein. So how this change happens, I think we can talk about that. पढ़ो पहले हिंदी में पढ़ो. अच्छा, एक कसाई बाड़े में, जैसे कि यातना शिविरों में मृत्युगंध के जीवंत हिलोर भर देते सभी कोर किनारों को, दीवारों की दरारों में रेंगते मकड़ी के जालों में उलझ ठहर जाते हैं धरती के छोटे छोटे गड्ढों में। कसाई बाड़ों में जानवरों की खाल के छिद्र खुले घाव हैं, डर के मारे रोंगटे ही नहीं बाल भी सीधे खड़े हैं, या फिर चित्त पड़े हैं सुन। ये भेड़ें दीवारों पर क्यों चढ़ जाती हैं और दीवारें कैसे खड़ी हैं छतों के ऊपर, जबरदस्ती खिला खिलाकर पाले मुटियाए भयभीत सुअर मुर्गे और मवेशी। हर एक ठीक जानता है कि आगे इंतजार में क्या बदा है। मृत्यु के दैत्य बढ़ते जाते जैसे कि हरे चारागाह, नीले ताल चंचल बहती धाराएं जाग उठे हैं कसाई बाड़े में कैद सभी की अनुवांशिक याद में। एक के ऊपर दूसरा भाग रहे सब अपनी जिंदगी के लिए, अपने भीतर भी वे बार बार कटते मरते हैं और मृत्युगंध के जीवित हिलोर दीवार की दरारों में रेंगते रहते हैं कसाई बाड़े में। End Game. In the slaughterhouse, as in concentration camps, live wafts of death smell fill all nooks and corners, slide up the cracks in the walls, entangle in cobwebs and settle in little pits in the earth. In the slaughterhouse, pores on the animal skin are gaping wounds. The hairs stand upright in fright or lie supine in numbness. Why do the sheep climb up the walls and the walls stand on top of the roof? Force-fed, fattened, and fearful. Hogs, chicken, as also cattle, each in full knowledge of what lies in wait. The demons of death grow larger as the green pastures, azure ponds, flighty streams awaken in the genetic memory of all in the slaughterhouse. One on top of the other, in the slaughterhouse, they run for their lives within themselves, get slaughtered again and again, while live wafts of death smell slide up the cracks in the walls. तो आजकल कोरोना टाइम्स में लगता है कि हम ही हैं स्लॉटर हाउस में. So that with that, I think we should just carry on with our couple of small poems from Ganga Dialogues. And ये then वही मैं कह रही थी कि कोरोना की बात आपने की, तो कोरोना का जो संवाद कोरोना के समय में जो गंगा से संवाद बनता है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं. जी. So this was something that I think ये शुरू हुआ जब कोरोना से पहले ही मेरे संवाद गंगा से शुरू हुए थे. और these dialogues have eventually become something like, I won't say writing of a diary, but something like a
poetic journal wherein, several experiences have been getting into them. This is a huge number of dialogues in little bits, like is my usual style, that these dialogues were written. And Rekha has translated quite a few of them. And in fact, we have made a YouTube together with some scenes also showing up. So let's just read one or two of them. And these dialogues, the ones that we are going to read, are the ones from the section which is actually the current times. But the dialogues actually started much earlier and have other experiences happening through them. So do you want to read first, or should I read? Okay. Carrying babies and sacks of deflated dreams, dragging bleeding heels, all those thousands homeward bound. Unlike the kafilas in 1947, these have definite homes, even if without roofs, without walls. Like you, O Ganga, fixated and resolute, they move on, leaving behind the blinding urban glitter, collapsing, rising, breaking, fragmented as in 1947, happily dying of starvation and fatigue, not of the virus. Happiness comes like the feel of wazoo, or ablution, or Ganga Jal on dead bodies. बच्चों को उठाए बुझे सपनों के साथ, खून लिथड़ी एड़ियों से घिसट रहे हजारों हजार प्रवासी घर की ओर। 47 के काफिलों के विपरीत इनके पास लौटने को घर है, भले ही बिना छत और दीवारों के। तुम्हारी तरह ओ गंगा, स्थिर और दृढ़ वे बढ़ते जाते, शहरों की चुंधियाती रोशनी को पीछे छोड़, उठते गिरते और टूटते हैं 47 की ही तरह बिखरते हुए, वायरस के आतंक से परे, भूख और थकान से मरने को तैयार। खुश हैं वे, खुशी के उसी भाव से जो प्रार्थनाओं से पहले हाथ पैर धोने से मिलती है, वुजू करते हुए या शव पर गंगा जल छिड़कते हुए। अजीब से पैराडॉक्स पे ये हिस्से का अंत होता है कि उस तकलीफ के साथ साथ ये कहना कि शायद विभाजन की स्थिति से तो उनकी स्थिति कुछ बेहतर है, शायद खुश हैं वे, वैसे ही जैसे कि ये जो बिंब है शव पर गंगा जल छिड़कने का, इसमें पूरी पीड़ा उभर आती है। शब्द खुशी का जरूर है, लेकिन जो बिंब है वो तकलीफ, दुख, अकेलेपन उन सबके हैं। तो हमें इससे निकलना होगा और एक दूसरे टाइप का डायलॉग जो है गंगा के साथ, वो छोटा सा, उसके साथ अंत करते हैं। जी। My soul, O Ganga, lies deep in your waters. My body must dive into this river from Himalayan heights to embrace her. तुम्हें पता है क्या ओ गंगा, मुझे हमेशा से पता था, जन्म से भी पहले, एक दिन मैं तुम में उतरूंगी अपने दुर्वह नामों और पट्टियों के साथ, फॉर्मूलों, सिद्धांतों और परिभाषाओं के साथ, और फिर ओ गंगा चांदनी में भीगी तुम्हारे पार उतरूंगी
अपने से मुक्त जीवन को फिर से जीने के लिए। ये अच्छा रहा क्योंकि ये दो अलग डायलॉग्स थे रेखा. दैट वाज अनदर डायलॉग दैट यू रेड. बट ठीक है, उसी का कंटिन्यूएशन था. हाँ, जो मैंने पढ़ा उससे अलग था ये. But I like it. I like the fact that we continued with that same mood and ended with a note which is a little positive. And तो आप that's it. ये वाला पढ़ेंगी, ये वाला अंग्रेजी आप पढ़ेंगी? ढूंढना पड़ेगा. कोई बात नहीं. ठीक ठीक. बहुत अच्छी, खास तौर पे सुकृता जी और रेखा जी, जो जहां से बात शुरू हुई थी, है ना, ये सेशन शुरू होने से पहले ही जो हमें, मतलब हम लोग जो जानते हैं या हमने पढ़ी हैं दोनों कविताएं पहले से, तो इसलिए हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ हमने फ्लायर पे लिखा था कि कैसे वो रिक्रिएशन होता है. और दोनों कविताएं इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, इट सीम्स लाइक यू आर एक्चुअली listening to two different poems, but there is of course some sort of twin sister like relationship between these two poems, and so it was absolutely beautiful. और ये जो आखिरी गंगा वाली नज्म है, पहले भी मैंने सुनी, मैंने वो वीडियो भी देखा, and I found it like so I could relate to it, and so heart-wrenching and positive. I think, you know, heart-wrenching words not only about something painful. It's a very kind of like cathartic kind of pain. Very beautiful. Thank you for बहुत खूबसूरत. तो और अगर आप लोग अभी कुछ और सुना रहे हैं तो सुनाइए. हम एक सवाल तितीक्षा का यहाँ मुझे दिख रहा है जी. वो हमें पीछे थोड़ा लौटा ले जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर बात हमें करनी चाहिए. मेरे भी कुछ सवाल हैं, मैंने देखा वो सवाल. जी. सुकृता जी, तितीक्षा पूछ रही है कि अगर आपको चुनना होता तो आप नथिंगनेस के लिए कौन सा शब्द चुनती? अगर मैं ट्रांसलेट कर रही होती. यस जी. ये जरा हो सकता है शून्यता ही होता, लेकिन या ये पॉसिबल है बिकॉज यू आर टेकन इनटू दैट डोमेन. बट मेरे अंदर कुछ और भी इसके साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे एक खालीपना, यू नो, नथिंगनेस में खालीपना भी आता है. हालांकि इसमें एग्जैक्टली वो खालीपना मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उस एक्चुअली शब्द की खोज में हूँ जहाँ खालीपना भी आए शून्यता में. तो अगर वो कुछ है तो आप बताइए. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कॉन्नोटेशंस मैं सोचती हूँ नथिंगनेस के साथ, शून्यता कहने से आप शायद वो मीनिंग खोजने वाली बात नहीं आती उसमें. शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट जैसे मैं उसको समझती हूँ. लेकिन नथिंगनेस कहते ही जैसे वो एब्सर्डिटी का एक सारा चक्कर है ना, जो जिसमें आप वो कहती है नथिंग टू बी डन, and yet you are always looking for something to be done, right? That entire paradox of existence जो है, शून्यता from my point of view is a little more positive, while in the Western context nothingness is almost nihilism. And so how do I bring in that connotation of that kind of absurdity? ये मेरा dilemma है. नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने मुझे भी मतलब सोचने के लिए दिया कि कैसे वो बिंब भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ना चाहिए. और पुण्य दो शब्द सुझा रहे हैं, खालीपन और एक रिक्तता. और एक सेंस ऑफ लॉस है और एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन दैट इट्स, शून्यता में एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है दैट इटसेल्फ इज, you know, spiritually an accomplishment, an achievement for of getting there. And nothingness may, it's like a very profound sense of loss versus achievement. But the thing is, like, both poems carry possibilities of those meanings. In one poem, by choosing one word, focuses or brings out one particular meaning in focus. So उसके मेरा भी एक सवाल था
कि इन अ वे दैट ये जो क्वेश्चन पूछा गया और जो आप लोगों ने जवाब दिया वो ऑलरेडी थोड़ा मुझे उसका उसकी तरफ ऑलरेडी उसका जवाब मिलता सा लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो जेंडर वाली बात है, गोलाइयां और दायरे, बिकॉज आई हैव बीन एंगेजिंग विद मोर विद दोज kind of topics in my teaching, in my research these days, and translation जो है मैं हमेशा उसके बिना काम चला नहीं सकती हूँ अपनी जिंदगी में। I feel like I am a product of translated text myself. Like growing up, I read more than just Hindi, Urdu, English, in Hindi, Urdu, English. So basically, my worldview जो है जो बना है उसमें ट्रांसलेशन का एक रोल है, जो मैं काम करती हूँ ट्रांसलेशन का एक रोल है, लेकिन किसी वजह से मैं बस बचती रही। ये सारे जो मौजूआत हैं, all these new discussions, I thought I'm not a translator, so I'm just like I had been on the periphery, but this now I feel like I find all these topics very exciting. So as I said that usually it is said that no matter how well you do, something is lost when you translate a literary text, particularly poetry. And here we started with this notion that when you translate, you actually create new meaning. You add something to the original. And we also, in a way, proved that through this activity, even though my question is still there that this adding more and losing less, is it, this kind of situation, this dynamic is there, is it there because both the poet and the translator come from the same background, even though the languages are different, but the cultural contexts are the same. But I'm asking Sukrita ji first, that yes, you are very generous in the sense that a lot of time poets can be very possessive, that even if there is new meaning, but it's just like something is, as parent as poet, it's hard to see that somebody is altering or doing something to your original. Seems like you are very generous, but still, we have been focusing on added value, but what क्या है जो फिर भी खो गया है, या क्या है फिर भी खो जाता है? क्या कभी कभी इसका भी कुछ एहसास हुआ? और रेखा जी से उसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो मैं कहूंगी वो बाद में जवाब दें, कि क्या था जो आपको लगा कि फिर भी बहुत मुश्किल था, even you felt a sense of loss. So I am focusing, we'll have some positive discussions. We will not end with this sense of loss. Sure. I think it's a very valid question, but that is why there's a difference. I started with that there is a difference between translating prose and translating poetry. Poetry, by its very own nature, is something which is ambivalent, and there is an element of a certain kind of, I won't say obscurity as a value, but it ultimately is obscured. So, and I hate it when people talk about, and we teachers tend to do that, and that's why I never wanted to teach poetry, because we always then reduce it to meaning, So unless we are able to evoke in ourselves first, and then in whoever we are addressing, whether it's students or colleagues or other readers, I think it's very important to just inspire the other person to come out with one's own experience of that poem. I would not say meaning, because I think the beauty lies in ambivalence, like life is. If you experience something, then that same experience can be viewed from different perspectives, isn't it? In an all-round kind of a situation. The same thing would be projected by all three of us here in three different ways, So that has something to do with one's own perspective, one's own creativity, right? Okay. So I think to me that is very important, that when you are translating a poem, particularly a poem, that you may be, as I said earlier also, you may be catching hold of one layer of its meaning. But in translation of poetry, I would even appreciate that if the ambivalence as it is maintained as ambivalence, right?
However, the shade of meaning might change. The shade of even the experience might change, but because you are going to choose different words. So as we were just discussing, like shunyata and nothingness, there is nothing wrong in using shunyata. There is nothing wrong in using nothingness. Because nothingness has its own connotations, added connotations because of the intertextuality that English language has with other writings that have happened which represent nothingness, and shunyata would have its own context. And that context will throw light. So if we say gain and loss, I mean, these two words are also very tricky, you know. I agree. And it's not even a bargain. It's just a question of what you are picking to, you know, sort of what is suitable in your context of it, right? And I think that does it. That does it. And this multi-dimensional value of a poem is what we have to realize. And if the translator or a reader, first of all, the translator has to be a very good reader. Has to have a heart of a poet, you know. If you have a heart of a poet, then you're going to see all kinds of possibilities in that, in those words. And that's why, you know, I mean, we say that, don't we? That words can be used like, I mean, they're magical. They're so magical. Sometimes they are used if only to cancel themselves. That words get eliminated. And that's the beauty of it. In their use, they get eliminated in art, right? And then only the experience stays. And so I don't want to even talk about gain and loss in the technical way, you know. But I know what you're saying, and that's what's provoking me to say all this, you know. No, that is, I mean, I agree with you, but this, like, the idea of the gain and loss and kya chhoot jata hai, and the other side of the embroidery, all these anxieties, I would say, have been associated with the act of translation. And what I'm seeing here, that this is a session that basically is based on translating poetry, which is a very difficult task. But what I did not feel, and all audience and me, and when I was like listening to the poems, both versions, so that anxiety is not here. And I feel like this itself is a message, and I wanted to bring attention to this, that maybe the translation studies always focusing on issues or problems of translation. We should start looking at the entire enterprise in a very different, positive way, with a little more open-mindedness and little more generosity. So Rekha ji, do you have, आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ ऐड करना चाहती हैं? हालांकि हमने, हाँ, कि आपके एंड से क्या कहना चाहती हैं एज अ ट्रांसलेटर? मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें कहूंगी. मतलब वो इस पूरी किताब के ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई हैं और ट्रांसलेशन थियोरी और कविता रचने की प्रक्रिया से. सुकृता जी ने कहा कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए कविता नहीं पढ़ाई, क्योंकि कविता जब आप आलोचना करने लगते हैं, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप पे इतना हावी हो जाता है कि जैसे मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया तो मैंने डर के मारे कभी अपनी कविताएं लिखी नहीं या साझा नहीं की, क्योंकि यही लगता रहा कि ये उस तरह की बेस्ट नहीं है जैसे कि मैं सोचती हूँ. दूसरी चीज ये थी कि जब मैंने ट्रांसलेट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि सुकृता की कविता के माध्यम से मेरे अंदर का कवित्व बाहर आ रहा था. तो मैं उन कविताओं की पाठक भी थी और सच में उन कविताओं की क्रिएटर भी थी. मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं लिख रही हूँ. और कभी कभी वो हंसी भी होती रही कि ये मतलब ये ट्रांसलेशन की जो दुनिया है, इस दुनिया का सृष्टा या ब्रह्मा कौन है, मतलब रचनाकार है या अनुवादक है. तो क्या अनुवादक सिर्फ उसके पीछे पीछे जाता है, या कहीं ऐसा भी होता है कि इसीलिए हम इसे जुगलबंदी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं. हो सकता है कि जैसे अब नथिंगनेस पे हमने बात करना शुरू किया तो शायद ये हम दोनों के सबकॉन्शियस में रह जाने वाली ये बात बहुत देर तक, कि आप जब कविता लिख रहे हैं या कविता का अनुवाद कर रहे हैं तो ये जो छवियां हैं
कि क्या वो पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव हो पाई या नहीं हो पाई। और इसका संबंध जो है ना, भाषा के जो सांस्कृतिक तहें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब सुकृता जी सोच रही हैं, तब उनके पास एक बहुत बड़ी परंपरा जो है वो उस लिटरेरी क्रिटिसिज्म की या लिटरेचर की है, जो कि पश्चिम से जुड़ा हुआ है, जो एब्सर्ड से जुड़ा हुआ है। और जब मैं उसे देख रही हूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी परंपरा, और हाल ही में हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, और हम बॉडी और सेक्सुअलिटी पे काम कर रहे थे, उस पर हम कुछ लिख रहे थे। तो हमने यही अंतर देखा कि हम हेलेन सिक्सू या लूसर इरिग्रे को जब हम पढ़ते हैं तो उनके द्वारा जो बॉडी और सेक्सुअलिटी की बात की गई है, देह को जिस तरह पढ़ा और समझा गया है, और हमारे यहाँ देखिए कि क्या परंपरा है, जहां वो देह केवल एक घड़े की तरह है, फूटा जल 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 ही समाना। तो आत्म और परमात्म के बीच देह तो एक आवरण की तरह है। तो इसमें देह की आकांक्षा या कामना या प्यास की जो बातें हैं वो कैसे आएंगी, तो इसका एक बिल्कुल क्रिटिसिज्म में भी और रचना में भी और अनुवाद में भी बिल्कुल एक अलग ही स्तर हो जाएगा। तो कविता और अनुवाद यानी साहित्य और अनुवाद, जो भी आप गेन इन ट्रांसलेशन या लॉस इन ट्रांसलेशन जो है, वो थियरी के शब्द तो जरूर हैं, लेकिन एक ही मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो भी सेंसिटिव रचनाकार है वो एक ही साथ मल्टीपल प्लेन्स पे रहता और जीता है, और वैसे ही उसका साहित्य और अनुवाद का कर्म होता है। तो वो मल्टीपल प्लेन्स उसके अपने भीतर के होते हैं, जिस परिवेश में वो है उससे होते हैं, और जिस साहित्य और संस्कृति की परंपरा से उसने बहुत कुछ ग्रहण किया है उससे बनते हैं। तो ये सभी कुछ वास्तविक है। तो मतलब आसमान का चांद भी उतना ही वास्तविक है, और पानी में उसका जो प्रतिबिंब है वो भी उतना ही वास्तविक है। कम से कम रचनाकार और साहित्यकार के लिए तो ये जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप you reminded me of the whole Plato and Aristotle's the discussion of the whole idea of literature and the imitation theory. So बहुत अच्छा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये बात हो रही है। शायद इसलिए मैं जो हूँ, क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ और मुझे पोइटिक्स में और क्रिएटिव प्रोसेस में और रीडिंग प्रोसेस में दिलचस्पी है कि किस तरह जो रिपर्टोयर आपके अंदर होता है, and then you kind of like a struggle to find something to जो अमूर्त को मूर्त बनाते हैं, आप हिंदी में अगर हम कहें अपनी रचना के जरिए, तो जब हम बना देते हैं मूर्त तो कई ऐसी चीजें बन जाती हैं जो हमारा इंटेंशन नहीं था, और रचना करने के का जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत कुछ छूट जाता है, सब कुछ नहीं कैप्चर होता है एक कविता में, और कविता में कुछ ऐसा नया क्रिएट हो जाता है कि जो शायद राइटर को नहीं पता है। तो मुझे लगता है वो जो एक तरह से गेन और लॉस, एवरीथिंग इज गेन एंड लॉस, जीना गेन एंड लॉस है। तो फिर उसी तरह से जो रीडिंग का काम है, मुझे लगता है forget about if you're even if somebody is not reading to translate, just reading, if I'm reading something, it happens like a lot I might not pay attention, and a lot I just am imagining, and I'm finding textual evidence to believe in my own imagination that it is rooted in that particular text. And then when you are translating, it happens the same, it's the same kind of similar process. So from this session, my personal gain is that I am more confident and more comfortable if I'm thinking about if I want to translate something. Otherwise, I was so afraid of translating literature, and also the whole debate around translation that I have been exposed so far was more anxiety producing, and this is more assuring. Fazia, I would like to sort of make one statement about, I get very satisfied if at all a personal satisfaction is sought from translation. I get very satisfied if I can see एक होता ना हर कविता में
कुछ खामोशियां होती है, राइट, वो साइलेंसेस जो है, अगर मुझे लगता है कि साइलेंसेस को पकड़ में आ गई है वो कहीं पे, उसी में वो बात बन गई है, राइट, सो वो हाउ डू यू ट्रांसफर साइलेंस, which is between two words, behind a line, which is not visible, but it's looming all around in the poem. Those silences are very important, and that's why I find that words have to be used in order to create silence. It's a very circular kind of a thing, और अगर वो हो जाता है ना, तो बस हो गया, उसके बियॉन्ड और क्या होगा, क्योंकि वो साइलेंस से साइलेंस, एंड देन बीच में वो शब्द आते हैं, और वो शब्दों का इस्तेमाल कैसा हुआ है, दैट इज द आर्ट ऑफ वेयरिंग बैंगल्स, राइट। उसके बाद फिर वो रीडर के माइंड में कैसे और तरह की साइलेंसेस प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट इज व्हाट इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ पोइट्री, how it's created and how it's recreated and further created, and उसमें ट्रांसलेशन का as ट्रांसलेशन नहीं देखा जाएगा फिर टेक्निकल वे। बहुत अच्छा। और जैसे रेखा जी ने कहा कि जब आप पढ़ रही थी तो जैसे आपके अंदर एक खुद एक क्रिएटिव प्रोसेस पैदा हुआ, तो आप लोगों की इतनी अच्छी इंस्पायरिंग गुफ्तगू से मेरे अंदर बहुत सारे नई बातें आ रही हैं जो मैंने पहले नहीं सोची थी। जैसे अभी अभी जो सुकृता जी आपने कहा साइलेंस वाली बात, तो मेरे जहन में कुछ यही इमेज आई कि जैसे शब्द जो है वो ईंटों की तरह है। तो देखा जाए तो हम स्पेस में ईंटें भरते हैं, लेकिन तो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो बेसिकली वी आर यूजिंग ब्रिक टू एक्चुअली क्रिएट स्पेसेस। So it is I thought about that, and just to share with you that while I was offline, actually, I was so inspired by reading both of your recitations and poems that I wrote down a few lines myself. So it did inspire. Maybe I will have a poem at the end of the day dedicated to Sukrita and Rekha. Thank you so much. Wonderful. Yeah, शुक्रिया। हाँ, मुझे लगता है कि वक्त जो है वो हो गया। हमने बिना घड़ी देखे 1.5 घंटे से ज्यादा बातें की हैं, और ये बात सिलसिला चलता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आई एम मोर इंस्पायर्ड, आई थिंक वी शुड हैव अनदर सेशन for getting up, not necessarily on translating, but even thinking about creation, creative writing as translation at some point. अब जब आप लोगों का साथ है और हम जुड़ गए हैं, और तो मैं इंशाल्लाह तो हम जो है मिलते रहेंगे और इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे। हम अपने जो ऑडियंस हैं उनको बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज है। ये जो समन्वय स्पेस जो हमने नाम रखा है, उसका मकसद जो मीनिंगफुल हमारे लिए, वो मीनिंगफुल इसलिए है कि समन्वय, जहाँ चीजें आकर जिनका समन्वय होता है, एक धारा एक दूसरे से जुड़ते हैं और कुछ नया बनता है। और स्पेस एक स्पेस है जिसमें आप जो चाहें, अगर आपके कुछ आइडियाज हैं आप हमें बता सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। तो ये कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। इट इज एटलीस्ट इन आवर हेड, माय ओन हेड, इट इज मच मोर देन दैट। और आप लोग अगर आपसे ये गुजारिश भी है कि हम जो है, एक मिनट, we are actually running a campaign that in order for us to keep doing these kinds of events, please help us and contribute. You can find our how to contribute that information on Samanvay's Facebook page and Samanvay Spaces website as well. लेकिन हम अपना ये सफर, ये सिलसिला जारी रखेंगे, और इस जुगलबंदी कदम ताल में और लोग भी हम चाहते हैं कि शामिल हों। और आज के लिए मैं पूरी समन्वय टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, रेखा जी का, सुकृता जी का। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग। आपकी वो कविता तो रह गई।
जी वो आपकी कविता जो आपने अभी अभी लिखी, मुझे नहीं लगा नहीं, वो कि मैं आप पूरी वो लिखी पढ़ते। नहीं, पूरी लिखी नहीं है मैंने, बस 2-3 लाइनें जस्ट टू एज अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ, जैसे वो जो है ना, मतलब हाँ, just Recorded just quickly. as just as some note I did write, so I will share with you and Sukrita ji later. Thank you so much for such an Thank you, inspiring session. Fazia. Thank you very Thank much. you. Thank you.